Assalamualaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 5. So we were on Unit 1 and we were doing page number 4 of this unit. Let's take out page number 4. As we have done the work on copy notebook, so today we will do the next three questions. Question number 7, question number 8 and question number 9 on copy. Right, what you will do, you will prepare the notebook page, and after that you will write question number 7 on the notebook, then question number 8 we will solve, then question number 9 we will solve. Now look at the notebook that I have prepared for you. Let me open this. Okay, this is today's work that I have prepared for you. Just look at this. First, what I have done, I have write date here, 03/06/2020, classwork in the middle, and then Wednesday here on the top right side. Then I've drawn margin line on both the pages. Right, look at this. Now what I have done, I have written unit number 1 here, then I have given one space, then I have given difference here, एक लाइन फिर आपने छोड़नी है. Then I have written name of the unit, और फिर उसका नाम लिखा मैंने यूनिट का, नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस. राइट, देन फिर उसके बाद एक स्पेस लाइन की छोड़ें और फिर पेज नंबर मेंशन किया ताकि आपको पता हो किस पेज का क्वेश्चन कर रहे हैं आप. राइट, prepare the page like this first, then after that copy the question from the book. Question number 7 you will write the following numbers in words. कि इन numbers को आपने किस में लिखना है, words में. It's easy. Now what you will do, you will write part number A, 4000000, and you will write this in spellings or in words, you can understand it. अब इस पे आपने क्या करना है, इसे वैल्यूज पुट कर देनी है आपने. फॉर एग्जाम्पल यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, million. So what is the number? This is 4 million. Easily you will write it, 4 million. Then as I have done in part number A, I have again done the same thing. I have placed the values here. So this is 76 million and 500,000. I have written here 76 million and 500,000. Right, now come to the part C. Here I have placed the values. This number is of 10 digits and it's of billion. Right, 2 billion and 149 million is the answer of this part C. Right, now come to part D. Here is also 10 digit number, so it is 2 billion and 840 million. So this is the number I've written in words here. Now come to the next page. This is part E. I've again placed the values on it. Unit 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. So you will do the same thing on your notebook. Right, what I've done here. Now after that I've written answer here. 185,620,000 is the answer. So I've written 185,620,000. Right, now part number F I have done here. It's up to million and 10 millions. Right, it's only I've placed value here. Now this is the simple one, 78 million. This is the answer of this question. Question number 8, I have copied the question 8 again from the book. I have written here, write the numbers and figures giving the space. You will do it as it is on your notebook. Now let's do the part A of this one. Now they are saying that you will write the numbers in figures and you have to give proper space in it. Now this number is given in millions. This number is given in billions. 2,500,000 means 2 बिलियंस. अब मिलियंस की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 3 जीरोज आ गए. फिर 500,000 है तो हमने 500 लिखा और 1000 लिखा. अब जब बिलियन की बात होती है तो आप ये याद रखें कि उसमें 10 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं आपने, और मिलियन की बात में आपने 9 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं. अगर थाउजेंड्स की बात होती है तो उसमें 6 डिजिट्स कंप्लीट करते हैं. तो आप हमेशा वैल्यूज़ ऊपर पुट कर लिया करें. बेशक प्लेस वैल्यू चार्ट भी बना सकते हैं, इसके लिए आपकी आसानी हो सकती है. देन पार्ट नंबर बी, 5,740 million. I have written here 5,740,000 is the answer here. Right, I have placed the
I've given the space between the numbers in sequence, right? C part, 8 billion is answer. There is no millions number given, so I've written 0 here for that. 600,000, तो 600 ये होगा और 1000 के लिए 3 zeros आगे मैंने लगा दिए. बिलियन की बात हो रही है तो 10 नंबर लाजमी होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 digits बन गए और ये आंसर आ गया. नेक्स्ट इज डी पार्ट, 3,209,750,026. इट्स वेरी इजी, मैंने ऑलरेडी लिख के दिखाया आपको. लेट्स लुक एट इट. 3,209,750,026 एंड 26 मतलब खाली 26 है, हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमने 0 लगा लिया, राइट. दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव रिटन हियर फ्रॉम बुक. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट. अब क्या हुआ, मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे, जो रिंग डिजिट इसमें बने हुए हैं मैंने वो उनको देखने के लिए उन पे उनकी वैल्यूज़ अगेन पुट की. फॉर एग्जांपल यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मैंने ये पेंसिल से सब कुछ लिखा है, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए. सो 14,179,623 इज द नंबर and what is the value of this ring digit, right? It is on 10,000 place, so we can say this is 7. so 70,000, 79 होगा ना, तो 70,000 कहलाता है, या फिर 70,000 इस तरह से लिख सकते हैं आप, right? Now B part, here is the ring digit, this is at tens place again, this is 90, so 90 million will be the answer, 90 million. Or 90 million will be written like this, 90 and 3 zeros here, 3 zeros here. You have to give the space here in proper way, right? Now come to C part. C part is also as easy as we have done these A and B parts. 349,563,182. I have placed the values here again. Then ring digit is at hundreds place. This is 500,000. So I have written 500 thousands or 500 and thousands. For thousands we will put 3 zeros. Now D part, here this number is ringed and it's on millions place, so we will simply written million here. 8 million or 8,000,000, क्योंकि ये जीरोज इस तरह लगते हैं कि अब देखें 8 के बाद कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, तो मैंने उन नंबर्स की जगह उतने ही साथ ही 0 लगाए हैं, राइट. Here is part E, 1 billion, 1 is ringed, right? अब 1 billion है, सिंपल इसका आंसर 1 billion आएगा. अब ये इसकी प्लेस बिलियन है तो हम कहेंगे 1 billion और 1 के आगे जितने डिजिट स्पेस के साथ जिस सीक्वेंस में लिखे हम वो लिखेंगे 3 3 3, तो मतलब 3 zeros इसकी जगह, 3 zeros इसकी जगह, 3 zeros इसकी जगह, 3 3 3. So it's easy. F part and the last part of this question, this number is ringed and it's of 10 digits, so we are having billions here. So this is at hundreds million, 500 million, or you can write like this, 500 millions में आगे कितने zeros होते हैं, ठीक है, आपको पता है 3 फिर 6 7 8 zeros होंगे और एक 1 digit मिला के 9 टोटल digits बनेंगे. जैसा कि ये 9 वाला 5 खुद है और 1 2 zeros इसके साथ आए, फिर स्पेस दे के 3 zeros आए यहाँ पे, ठीक है, ये देख लें यहाँ पे 3 zeros और फिर स्पेस देके ये 3 zeros और यहाँ से, राइट. सो यू विल डू दिस पेज बाय योरसेल्फ. जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एंड ट्राई टू डू ऑल द वर्क बाय योरसेल्फ. जस्ट टेक हेल्प ओनली and then after completing the work just compare your answers with the video, right? I hope you understand this page properly. So we will start the next question tomorrow, the 10th 11th and 12th question. We will do those questions tomorrow on notebook. Okay, inshallah we will do those. Allah Hafiz.